Let's begin the tenses. Most important segment of the grammar. But being in the fast track course, the most beautiful part is the simplicity. We are not going with the conventional method the way it is being described and explained in most of the grammar books and the way you have done in your childhood, in your school days. So we are not going that way. We are going to do it in a modern, new way where it will create simplicity to understand, simple to practice, and then simple to master. In most of the grammar book, rather all the grammar books, you will find that always they talk about past tense first, then present and future. But what we are going to do is we'll start with the present tense first. Present is most important, not the past. So most important one is present tense. So we'll start with the present tense. I will consider it as number 1. Then past tense and then future tense. Let's see. As you all know, there are 3 tenses. We'll start with present. So present, past and future. For the further classification, every tense is divided into 4 different segments. 1, 2, 3, 4. So wherever number 1 is written, it's indefinite tense. Wherever number 2 is written, this is continuous tense. 3 means perfect and 4 means perfect continuous tense. Once again, wherever number 1 is written, it's indefinite. So present indefinite, then past indefinite, future indefinite. Continuous, so present continuous, past continuous, future continuous, perfect tense, present perfect, past perfect, future perfect, and then perfect continuous. So present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. We'll go a little slow, and although indefinite tense is the first one in the category, but we will not start with the indefinite tense. We will start with the continuous tense first. It's easy, it's simple. After completing it, you will have the confidence that you have done it in a very easy manner. So we'll start with the continuous tense first. What we are going to do is, we are going to have a relation in Hindi and English to make it easily understandable. So I have given numbers also. I have given Hindi translation at the same time. The rule of formation of sentence. Continuous means the action and the verb is going on. काम चल रहा है, क्रिया हो रही है. इसीलिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है, हूं, हैं, एंड कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा, रहे, रही. कंबाइनिंग बोथ, द हिंदी ट्रांसलेशन विल बी रहा है, रहे है, रही है, रहा हूं. हम हिंदी में जब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से टोन आएगी. In English, the formation of the sentence will start with subject, he, she, it, this, that, any name. And then helping verb. HV means helping verb. There are 3 helping verbs in present continuous tense. Is, am, are. Is always used with singular. So if your subject is single, helping verb is. He is, she is, my brother is, Mohan is, my boss is, my daughter is, my son is. I am. You are. You is singular as well as plural. It is second person. तो you के साथ हमेशा are लगाना है. I के साथ हमेशा am लगाना है. Rest of the plurals are. They are. We are. Okay. Once again, start the sentence with subject followed by helping verb is MR according to the subject. Then V1 ing. It means first form of the verb with ing. It will become only one word. Then preposition, then object. Simple. Past continuous. Hindi translation, raha tha, rahe the, rahi thi. English formation, start the sentence with subject plus helping verb. There are 2 helping verbs, was and were. Was is used with singular and were is used with plural. But I के साथ में was, you के साथ में were. I was, he was, she was, you were. Once again, subject plus helping verb, was, were according to the subject. First form of the verb, ing, it will become one word, preposition and then object. Future tense,
का, गे, गी, और क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर रहा, रहे, रही तो आएगा ही उसके साथ में. सो द टोन विल बी इन हिंदी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. इन इंग्लिश द सेंटेंस फॉर्मेशन इज subject plus helping verb. Here the helping verbs are will or shall. उसके बाद में आपने be लगाना है. तो will be, shall be plus V1 ing plus preposition plus object. Will can be used with all the subjects. So in the beginning, if you are practicing will with all the subject, there will be no mistake at all. Shall is normally used with I and we. But once again, will can be used with all the subjects, so I insist to start with will. Later on, you can differentiate between will and shall and practice it for the mastery. English sentence formation will be subject plus helping verb, will be or shall be. Then first form of the verb, ing plus preposition plus object. I have taken only one sentence for the example. My mother is preparing something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना रही है. My mother was preparing something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी. My mother will be preparing something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना रही होंगी. Clear? Now we'll go to the indefinite tense. Indefinite tense means something which is not definite. But what is not definite? And if something is not definite, why are we using it? Don't go with the dictionary meaning. Indefinite tense talks about the verb which is going on or which goes on a routine basis. Something which is a habit. Something which is a universal truth. जो हमेशा होता है, आपकी आदत है, या सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी क्रिया करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, everything comes under the category of indefinite tense. Indefinite tense में क्या definite नहीं है, exact time आपका पता नहीं है कि आप कब वो काम करते हो. Continuous tense में आपको पता चलता है कि आप अभी वो काम कर रहे हो. For example, if I use the sentence I read newspaper, it means मैं newspaper पढ़ती हूँ. But if I use a sentence I am reading newspaper, it means मैं अभी पढ़ रही हूँ. In the first sentence, you don't have the clarity कि मैं पढ़ती हूँ लेकिन कब पढ़ती हूँ. Even if I say I read newspaper every morning, you don't get the clarity at what time in the morning. But when I say I am reading, it means at this present moment I am reading newspaper. I go for a movie every weekend. तो हर weekend पे मैं movie जाती हूँ. But if the sentence is I am going for a movie, it means मैं अभी movie के लिए जा रही हूँ. So that's how it has got the clarity. But in indefinite tense, you have the clarity, but you are not very sure about the time. Present tense, Hindi translation will be ता है, ते है, ती है. Sentence इस तरीके से खत्म होगा. मैं जाता हूँ, आता हूँ, खाना खाता हूँ, ठीक है, पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी. ता है, ते है, ती है. In English, the sentence formation is subject, verb की first form, उसके साथ में आपने s और es लगाना है. लेकिन s और es आपने कहाँ लगाना है? सिर्फ एक रूल याद रखना है आपने. I'm not giving you many rules. I prefer to give you simple and easy to understand, learn, practice and master. The only one rule which you will have to remember is अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर है, he, she, it, this, that, any one name, any one relation, my brother, my sister, okay, Radha, Sita, Geeta. Once again, only one rule is to be practiced. If your subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर, तभी आपने वर्ब के साथ एस या फिर es लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आप इसे एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है लेकिन आई और यू नहीं है, क्योंकि आई इज फर्स्ट पर्सन एंड यू इज सेकेंड पर्सन. आप इसी रूल को दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हो या फिर कह सकते हो. इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है
लेकिन आई और यू नहीं है, तो ही आपने वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस लगाना है। एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है? इफ द वर्ब इज एंडिंग विद ई तो सिर्फ एस लगाना है, कम्स। इफ द वर्ब इज नॉट एंडिंग विद ई, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ईएस। कभी कभी वाई कट करके हम आई ई एस लगाते हैं। सपोज द वर्ब इज स्टडी, सो वाई कट हो जाएगा आई ई एस। नाउ कमिंग बैक टू बिगिन विद subject plus first form of the verb plus es plus preposition plus object। हिंदी में ता है, दे है, ती है, लेकिन आपने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इटसेल्फ सेज है, हूं, है। नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका सेंटेंस ता, ती, ते किसी भी मात्रा से खत्म होगा। जैसे मैं सुबह जल्दी उठा, मैं कल रात को देर से सोया था, हम कल रात को देर से सोए थे, आज सुबह हम जल्दी उठे और घूमने गए। तो एंड में आपकी कोई ना कोई मात्रा आ रही है। इन इंग्लिश द ट्रांसलेशन विल बी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। फ्यूचर टेंस गा, गी, गे। विल और शैल का अपना मीनिंग सिर्फ गा, गी, गे। मीनिंग चाहिए तो हम लोग प्रॉपर वर्ब से उसका मतलब निकलेगा, लेकिन विल शैल से गा, गी, गे। सो इफ आई हैव टू से आएगा तो विल कम, जाएगा विल गो, खाना बनाएंगे विल कुक। क्लियर? इन इंग्लिश द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। शैल आपने आई और हुई के साथ लगाना है, बट वंस अगेन will can be used with all the subjects. So to begin with, if you start practicing with will, you will be quite comfortable and you will be confident कि आपकी गलती नहीं हो रही है। So subject plus will plus preposition plus object. One example, my mother prepares something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाती है। देखो, for some more practice, if your subject is single आपने SES लगाना है। For example, my mother is single तो आपने verb के साथ S लगाना है, तो my mother prepares। लेकिन अगर आपने सेंटेंस यूज किया कि मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो I prepare, right? You prepare। My father prepares something special, but if you say my parents, so my parents prepare, I prepare। My mother loves me, my father loves me, my parents love me, I love my parents। Clear? My mother prepared something special for dinner। मेरी मम्मी ने स्पेशल बनाया, डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाया। My mother will prepare something special for dinner। मतलब मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। Continuous tense we have already done, so give yourself a pat. You have done indefinite and continuous both the tenses in one go। Perfect tense। Perfect means something which is already completed। तो ऐसा लगता है कि फिर ये past tense है। No, 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 no। It is available in all the three forms। So it is available in present perfect, past perfect, and future perfect। And this is for the first time we are going to use third form of the verb। In the present tense, we have used first form. In the past tense, we have used second form. In future tense, once again it was first form followed by will shall। Sorry, in the future tense we used first form of the verb with will or shall। In continuous tense everywhere we used first form of the verb and then ing, and it became one word: coming, going, sitting, standing, reading, writing, jumping, washing, cleaning। For the first time we are going to use third form of the verb, and here the Hindi translation is chuka, chuke, chuki। So if it is present perfect, it is chuka hai, chuke hain। According to the gender, according to the number, it will change। English sentence will be subject plus has have। Has is used with singular and have is used with plural। I के साथ हमेशा have, you के साथ हमेशा have। Singular subject he, she, it, this, that, has। We have, I have, you have। Clear? Subject plus as or have according to the subject plus V3 means third form of the verb
plus preposition plus object. Past tense, चुका था, चुके थे, चुकी थी. Here the helping verb is special verb. Why we call it special verb? Because it is one of the modals. But has, have, had हम जब कभी भी लगाएंगे तो इनके बाद हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. Here there is only one which is had. In present tense हमारे पास दो हैं, has, have. Past में हमारे पास सिर्फ had. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, everywhere you will have to use had plus third form of the verb plus preposition plus object. Future perfect, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. Here once again there is only one special helping verb which is have. So present tense में we had two, has or have. Past tense में हमारे पास सिर्फ had, future में सिर्फ have. Subject plus will have या फिर shall have plus V3 plus preposition plus object. One sentence, for example, my mother has prepared something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना चुकी है. My mother had prepared something special for dinner before I reached home. मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना चुकी थी. Most of the time, past perfect tense is used in those sentences where two actions or two verbs are being performed one after the other. Once again, past perfect tense को ज्यादातर हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक ही सेंटेंस में दो actions या फिर दो verbs हों एक के बाद एक और दोनों ही past tense में. जो पहले हुआ आप उसे पहले बोलो, जो बाद में हुआ उसे बाद में बोलो. जो पहले हुआ उसके साथ में आपने had लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. जो बाद में हुआ उसने आपको सिंपल पास्ट टेंस ट्रीट करना है. फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में मेरी मम्मी पहले खाना बना चुकी थी, राइट? मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले, इसका मतलब खाना पहले बन चुका है. तो प्रिपेयर जो वर्ब है उसके पहले आपने had लगाना है और रीच जो वर्ब है उसको आपने सेकेंड फॉर्म ट्रीट करना है, मतलब सिंपल पास्ट. वन मोर एग्जाम्पल, The movie had started before I entered the cinema hall. मतलब मेरे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. तो दोनों में से पहला काम क्या हुआ? मूवी स्टार्ट हो गई, तो had started. बाद में क्या हुआ? मैं पहुंची, तो I reached. Once again, the movie had started before I reached the cinema hall. Future perfect. My mother will have prepared something special for dinner. मेरी मम्मी डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना चुकी होगी. Now the fourth one is perfect continuous tense. This is number 4 and 4 is equal to 2 plus 3. It means this is a combination of continuous and perfect, the two tenses. But how is this possible? Just imagine. We have just learned and practiced perfect tense और perfect tense में हमने verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी है. has, have, had लगाया और verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी है, राइट? और continuous tense में हम लोगों ने verb की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ing लगाई है, राइट? तो अब एक ही सेंटेंस में आप verb की थर्ड फॉर्म भी लगाओ और verb की फर्स्ट फॉर्म लगा के ing लगाओ. How is this possible? This is possible. Let's see. ये टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन या फिर वर्ब पहले से स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी भी वो क्रिया चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से मुंबई में रह रही हूँ, तो फिर इट विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर मुझे सिंपल सेंटेंस यूज करना है कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो आई लिव इन मुंबई. मैं मुंबई में रह रही हूँ, आई एम लिविंग इन मुंबई. मैं 10 साल से मुंबई में रह रही हूँ, I have been living in Mumbai for a decade. Decade means 10 years. So पहले से verb चालू है means it's already started somewhere in the past, but still it is in continuation. There only we use perfect continuous tense. इसलिए हिंदी में हमको ये ट्रांसलेशन कैसा होगा बताना थोड़ा सा मुश्किल है. So leave it. Once again, present perfect continuous will start with the subject or has have according to the subject. The rule says कि has have के बाद आपने verb की थर्ड फॉर्म लगानी है. So, keeping that rule in mind, we have used been. Been is third form of the verb be. Be का मतलब होता है होना.
तो बी की थर्ड फॉर्म लगा के आपने वो रूल को वहां पे सेटिस्फाई किया है. एंड V1 ing, दिस इज अ रूल ऑफ कंटिन्यूअस टेंस कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है. सो दीज टू रूल्स दोनों को हमने यहाँ पे फुलफिल किया है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. इन द पास्ट perfect continuous tense, subject plus had been plus V1 ing plus preposition plus object, because there is only one special verb which is had. In future tense there is one special verb which is have. So the sentence will be subject plus will have or shall have plus V1 ing plus preposition plus object. An example is, my mother has been preparing something special for dinner. My mother had been preparing something special for dinner. My mother will have been preparing something special